Because the plan kept changing. You know, I thought I'll be there. I'll be able to. Live. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Upachayanam, Namo Loe Savasahunam. Jai Jinendra Sabiko. So today is our first class of semester 5, year 3. We'll start with Moksh Marg Prakashak, Adhikaar-6. We are skipping Adhikaar-5 only because it talks about different, I guess, philosophies, wherever there is issues, but sort of it is less relevant because most of us don't come from that. That's why I guess it is skipped. So, and like I said, anybody who is interested can always go back and read it. वो सब में obviously take the attitude कि हमें अपनी भ्रांतियां कम करनी है, rather than get a feeling of कि, why they are talking about other philosophies or criticizing, because that is not the purpose there at all. ठीक है ना? The purpose is कि हम अपनी भूलें को देखें. If we are there, then only we need to worry about it. If we are not there, what somebody else does is not our concern. ठीक है ना? So, because what happens is, I don't know if I've covered these 4 bhavnas with you. Maitri bhavna, gun pramod. The third one is कि अगर हमें किसी का, suppose you do something nice to somebody and still they in return don't do nice to us or are not able to appreciate that we mean well. You just have a karuna bhav for them, not anger bhav for them. क्योंकि उनको अभी तक उनका टाइम नहीं आया है where they would have this समझ, है ना? But for us to study what others are doing wrong is the only purpose is to improve ourselves, not others. कोई पूछता है, of course, by all means give your time in explaining. But if you, कई बार होता है, we get all excited and हम अपने मन से सबको समझाने लग जाते हैं. But if you see that the person in front of you not interested, wants to argue, quit. It's not their fault because they are not there yet. So obviously जितना उनको पता है वो उसी हिसाब से बात करेंगे ना. So मैम इसमें करुणा भाव क्यों होना चाहिए? Like why we should have that करुणा भाव also? करुणा भाव इसलिए कि देखो, जो पर्सन को पता नहीं है और वो अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको इंसल्ट कर रहा है, नहीं एग्री कर रहा है, आप तो उसके लिए अच्छा सोच रहे हो पर उसका प्रतिकार खराब आ रहा है, तो रादर देन गेट एंग्री एट दैट पर्सन और फीलिंग द्वेष भाव, अरे यार एक तो मैं तेरे को अच्छा कर रहा हूं एंड यू आर नॉट इवन टेकिंग इन द राइट स्ट्राइड, सो फॉरगेट इट, आई एम नॉट गोना मीन वेल फॉर यू. You don't want to get that. Just like the little children, right? Little children don't know things, right? And they sometimes act silly. हम थोड़ी उन पे नाराज होते हैं. We know उनकी एज है, वो उस हिसाब से एज अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहे हैं. वैसे ही जिनको नहीं नॉलेज है वो उस अप्रोप्रिएटनेस से बिहेव कर रहे हैं, उस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं. तो we shouldn't mind or get the द्वेष भाव towards them. So because we are maturing, learning this knowledge. So this should build more tolerance for us, that we don't easily get affected by others' behavior. Because we understand सबकी कर्मों की गतियां अलग है, सबके उदय काल अलग चल रहे हैं, सबके reactions अलग हैं, है ना? So that is why even if we read the 5th chapter, क्या होता है, कई लोगों को suddenly द्वेष भाव आता है. Suppose I have a very close friend who is Hindu, Christian, whatever. Obviously you're attached to your friend, so you kind of go along, you do whatever. Now suddenly I find out, oh my God, ये तो बोल रहे हैं वो सब चीजें ठीक नहीं है. So they don't want you to misunderstand, but take it in the right stride. And then once you are solid about your
belief, knowledge, then it doesn't matter. Wherever you go, you will take it in the right perspective. So चलो, तो आज हम जो चैप्टर 6 है, दैट इज, सो चैप्टर 5 है अन्य मतियों के लिए, राइट? अब क्योंकि ज्यादातर लोग जैन हैं, चैप्टर 6 इज फॉर जैन हु थिंक कि हम सब सही कर रहे हैं, तो वो कहाँ भूलें कर रहे हैं, उसके लिए वो चैप्टर है. तो शुड वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग and let's just read. I don't have my book, so we'll just share it on the screen. Okay. Okay, so I'll read the first page, then you guys can start. छठवा अधिकार, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध. मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव, तज तिनको साचे भजो, यह हित हेत उपाय. तो क्या बताया? जो लोग मिथ्या देवादिक को पूजते हैं अपने कल्याणकारी समझकर, उनको मिथ्या भाव है और इस सोच को तजना ही उनके हित में है. ठीक है? अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादि के भाव पाए जाते हैं. उनकी पुष्टता का कारण कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का सेवन है. उन उसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसका निरूपण करते हैं. सो देखो, sometimes if you think about it, a person who is what do you call non-religious, who has never done anything, उसको कोई देवी देवता कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं, sometimes they are better off because they are a clean slate and they're going to learn the correct thing from the beginning. जिन्होंने क्या भैरू जी, नाकोड़ा जी, फलाना जी, ढिमाका जी पूजे हुए हैं, all their life they've seen it in their family, and now you tell them कि वो तो कुदेव है या कुगुरु का स्वरूप बताओ, that is a bit difficult for them to digest. Not that they don't understand, it's just the moha bhav that kind of makes it difficult for them. सो पहले कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध. वहां जो हित के कर्ता नहीं है और उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करें, सो कुदेव है. उनका सेवन 3 प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं. कहीं तो मोक्ष का प्रयोजन है, कहीं परलोक का प्रयोजन है और कहीं इस लोक का प्रयोजन है. सो प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ कुछ विशेष हानि होती है, इसलिए उनका सेवन मिथ्या भाव है, वह बतलाते हैं. अब वो कैसे मिथ्या भाव है? अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति का होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं, परंतु मोक्ष होता नहीं है. ठीक है ना? ये हमने सुना हुआ है कि कई, इवन जैसे सत्यनारायण की कथा में, इस भव का पर whatever लोग सुख भोग कर को मोक्ष को प्राप्त होते हैं. सो इट इज कॉमन सेंस कि आप कोई एक देवी देवता को पूज लोगे तो हाउ कैन दे अकॉम्प्लिश, हाउ कैन दे गिव यू मोक्ष, है ना? तो उनका वर्णन पहले अन्य मत अधिकार में कहा ही है, तथा अन्य मत में कहे देवों को कितने ही परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा. मूव द पेज हेमल. उसका वर्णन नहीं होता, ऐसा प्रयोजन सहित सेवन करते हैं.
सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है, परंतु आप तो पाप उपजाता है और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा। तो वहां अन्याय ठहरा, क्योंकि किसी को पाप का फल दे, किसी को न दे, ऐसा तो है नहीं। जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर किसी का बुरा भला करने वाला नहीं है। So, like for example, in this one, you can take that example, जो 9/11 में वो थे ना, terrorist. They were, what were they promised? कि if they knew they were going to get killed in whatever action they were doing, but they were promised that that is something they are doing for God, and if they are killed in the process, they will get heaven and some nicer things. So even though we didn't do chapter 5, but these are a couple of examples I'm sharing. Prabhaji, can Tatha, you summarize, because I didn't understand the paragraph? Sorry. okay. So I'm this paragraph is basically telling you कि in अन्य मतों में, that means non-Jain में, they say कि आप ये पूजा कर लो, आपको मोक्ष मिल जाए. Gave you guys the example of सत्यनारायण कथा. सत्यनारायण कथा में ऐसा लिखा है कि इस देव की कथा करने से इस भव में सुख और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है वो जीव. नाउ ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस कि आप किसी एक देव की पूजा करने से अगर आपको मोक्ष, इतना इजी चीज तो हो नहीं सकती ना. इट डजंट मेक लॉजिकल सेंस. सो व्हाट दे आर सेइंग इज व्हाटएवर they are misguided in that sense. And same thing, या तो मोक्ष की प्रॉमिस करते हैं या परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा, ऐसा प्रॉमिस करते हैं. तो आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ द टेररिस्ट. What they say in Islam religion, that you get heaven and heaven has all the sukh, no dukh, that type of thing. Is that clear, Hemal? Yes. And so they are logically explaining you that now use your judgment and brains, that is that possible that you do pap karya and you will get all the good fruits. That's so you're obviously doing, they did pap, but they are believing and that their something promise good will good. happen to us in the next life. Right. So this, what they're saying is that use your logical sense. How is that possible? कि पाप करो और पुण्य का फल मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. हाँ. Yes. तथा उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते हैं और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं. जैसे वो बकरा ईद आती है ना इन लोगों की. सो व्हाट डू दे डू? कि वो whatever their philosophies, I don't know the details, but they assume कि whoever they're worshipping needs this जीव की हत्या, जो बकरे को काटते हैं और whatever they do. तथा भोजन नृत्य आदि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं. सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा ही नहीं. हिंसा विषय कषायों को सब पाप कहते हैं और पाप का फल भी सब बुरा ही मानते हैं. तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा विषय आदि का ही अधिकार है, इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला नहीं होता. So basically, they're taking you step by step logically and proving it to you कि अगर आपने अन्य मतों में ऐसा सब सुना है तो it doesn't make logical sense, right? कि अगर आप वो whatever कि kill that animal and then eat, drink and be merry, how can that take you to the meritorious fruits? So they're basically proving them wrong कि अगर इस तरह से मतों में ऐसा कहा जाता है तो it doesn't make sense. व्यंतर आदि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध. So now this is the category where souls can be in a certain place which is considered sort of swarg, but it's below the manushya lok, who have the ability to roam around. Okay.
So taptha बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी. It's Vyantar is just a paryay, right? Just like Manushya, animal. So you took birth in the Vyantar dev. तो शत्रु नाश आदिक व रोग आदिक मिटाने, धन आदि की व पुत्र आदि की प्राप्ति इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित कुदेवादिक का सेवन करते हैं. हनुमान आदि को पूजते हैं, देवियों को पूजते हैं, गणगौर सांची आदि बनाकर पूजते हैं, चौथ शीतला दहाड़ी आदि को पूजते हैं, भूत प्रेत पितर व्यंतर आदि को पूजते हैं, सूर्य चंद्रमा शनिचर आदि ज्योतिषों को पूजते हैं, वीर पैगंबर आदि को पूजते हैं, गाय घोड़ा आदि तिर्यंचों को पूजते हैं, अग्नि जल आदि को पूजते हैं, शास्त्र आदि को पूजते हैं, अधिक क्या कहें, रोड़ा इत्यादि को भी पूजते हैं. We all are familiar. I mean, maybe some are more familiar than others, but I'm sure in a lot of the homes, some of it, this has been followed at some point in time. Actually, we So, see it in movies. yeah, you also see it in movies, right? Or movie mein dekh ke they glamorize it so much, you think, oh wow, this must be true. कि कितना दिखाते हैं उसने उसको, बस गणेश जी से किसी को पूजा और वो बच गया. या फिर वो करवा चौथ and in Rajasthan it is Teej and whatever. Now, the interesting thing is, all these educated people who have seen the ladies' husbands die, those who have been doing karwa chauth all their life, still don't get it. And the custom never ends. So, I mean, you wonder how foolish can people be? They are doing all these vrat, I mean, and it is in every this thing. Rajasthan mein Teej hoti hai, certain states mein Karwa Chauth. Even in Maharashtra, there is some vraksh ki puja hoti hai, something for long life of the husband. Word Savitri Puja. In fact, just a couple of days, yeah, I was at my mom's neighbor's place, and they were talking that one of their daughters' husband had died the day they had that puja. The daughter had just done the husband's long life puja. She came home and got the news that the husband was killed in a car accident. But still, the rest of them have not stopped doing that puja. So, I mean, you wonder, I mean, where is the common sense here? So, basically, they're saying, don't get swayed with these things. Because there is always a possibility that you might experience कि मैंने इसको पूजा और कुछ अच्छा हो गया. And especially once somebody gets a good experience or bad experience, they think this is it. They will start believing it. Like one of my friends, her husband used to tell me they would do what puja is this? Oh, that Navratri. Navratri mein 9 days they would do diya for the Mataji or whatever, okay? And they were very particular about it, even though they are Jains. तो कि नहीं नवरात्रि में तो हमको घर जाना है, वो माता जी का दिया तो करना ही करना है. I said, we are Jains and we don't like really particularly care that much, और कुछ उसकी importance इतनी नहीं है हमारे में. तो बोले नहीं हमारे को ऐसे खराब एक्सपीरियंस हो गया था कि हमने कुछ नहीं किया माता जी का और कुछ हो गया. Now think about this. It was just a coincidence that whatever had to happen happened, and same time they had forgotten to do the Mataji ka diya or whatever. So now forever it's stuck in their head that if they don't do Mataji ka diya, something bad will happen to them. And these are smart PhDs, you would think they wouldn't be so stupid, but people do that. That is being superstitious. That's all it is. And I mean, being scientists, whatever, I mean, at least you have that much logical sense. But people get swayed. So, Prabhaji, I have a question. तो अपन मंदिर में जाते हैं ना, जैन मंदिर, दिगंबर मंदिर में भी गए. They offer to do puja on any tithi that you, or date that you ask them to do. What is the purpose of doing that? Why people put their name? Like, my mom put a puja down for Tara's name. What is she doing? I honestly,
I take that as a mandir maintenance fund. I think these are just, they have to do these kind of things because not all temples, can, get tons of donations, and they have to maintain temples. So they have to find ways of regular income for the temple. So for example, bhojan shala chalti hai, right? So usme, you put your whatever the amount you give for 1 day in a year, 5 days in a year, that whatever the cost of the food per day it is, you will be paying, and you can pay a lump sum from which interest every year, your family is dedicated to that day's food. So that is basically that all year round, they can provide free food in the bhojan shala. So it's just a, managing system of finances. So So I then, take it as like, हमारी जैन अंडरस्टैंडिंग की अपेक्षा से हमें लगेगा कि ये लोग जो पूजा करा रहे हैं हिंदू टेम्पल में नहीं, वो पूजा तो गलत कराते है, होंगे, बिकॉज व्हाट हैपेंस वो इज लोग भी वही हमारे में करते तो ऐसे होंगे। नाम लेके तो पूजा कुछ होता ही नहीं है। सी वी डू भगवान की पूजा इज बेसिकली व्हाट, ज्यादा हम स्तुति गाएंगे, है ना। पूजा तो जो होती है जैन, अपनी जैन पूजा इज भाव पूजा, भगवान का गुणानुवाद होता है, तो उसमें तो कहाँ हम नेम लेते हैं। हिंदुओं में होता है वैसा कि वो नाम आपका लेके बोलेंगे, बड़े बड़े सब मंत्र एंड वट एवर वी डोंट हैव सच थिंग्स इन जैन। नाउ देयर इज, I don't know which temple you're talking about, but I have seen in Digambar temples also some wrong things like similar to Hindus being done. Because there must have been some influence in some times कि उनको भी जो हिंदुओं का influence आ गया। मैंने तो, like I said, I was shocked to see one Digambar Jain temple doing havan, which is like a big no in the Jain tradition. But So even I don't know. Prabhaji, even the Jain temple, right, that you've been to when you came to visit, right, that one, they will. So when they do that Indrani, then they'll do a lot of they'll have bundika laddu or cones that they will padrao. Then they will do a lot of they have some other white cone thing that they also then offer up as part of the Digambar puja. So what is all that then? Diwali time? No, it happens even otherwise. They'll sometimes even do it. They'll do it during Diwali. They'll also do it for certain special, chodas or this or that. So also they'll do certain special occasions. That's what I'm saying. So none of it is necessary. जनरली In gen- निर्वाण दिवस कभी अपने तीर्थंकर भगवानों का रहता है तो निर्वाण लाडू चढ़ता है, तो मे बी वो कौन जैसा जो I have known, I was brought up in the Shwetambar tradition, so Nirvan Ladu I kind of found out later. But प्योर जैन पद्धति में निर्वाण लड्डू की भी कोई गुंजाइश नहीं है। नाउ अगेन what we are studying here is more purist than Digambar or Shwetambar. So this chapter is going to bring about things that are done wrong in Digambar, things that are done wrong in Shwetambar, all that this is going to cover. So Nirvan Laddu is basically a symbolism because मोक्ष फल होता है ना, मोक्ष इज द अल्टीमेट, तो इसलिए उस इच्छा से वो निर्वाण का लड्डू, somebody must have came up with this idea कि निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं, एंड लोग तो रागी होते ही हैं, कोई लॉजिक यूज करने की जरूरत कहाँ है, चलो एवरीबडी भेड़ चाल, दे स्टार्ट डूइंग दैट, एंड देन यू हैव सीन इट इन योर चाइल्डहुड, सो यू ब्रिंग इट टू अमेरिका आल्सो, I have seen this in my childhood, so I'm going to start this. If people don't know better, everybody continues to do that. So Prabhaji, it's just, I have a question then. I should not feel bad if I didn't go to the temple to get the Nirvan Laddu then? Yes, of course, you should not. Okay. And so it's not important. The Nirvan Laddu in Jain pujas, whatever you offer, you are giving up. In Jain, you never eat that stuff yourself. So there is no such thing as getting it. So what happens to that food? Because it's a waste. If it's a pure Jain temple, anyway, it's not a good idea. See, in Pittsburgh, our temple is combined, Jain and Hindu. So what we do is
कि हम लोगों की पूजा में जो भी हम even Digambar traditions, they put badam, coconut, whatever in their puja. In Shwetambar traditions, they put live flower and mithai and whatever. True. So once the Jain puja is over, because Jains cannot eat those things, we pick it up, we transfer it to the Hindu side. They use it as prasad. Oh. But if it's only Jain temple, then they don't have that facility. So I don't know what they do with it. Oh. हम Our एक्चुअली temple कई does कई all these टेम्पल्स things. में चिड़ियों को खिला देते हैं, बंदरों को खिला देते हैं, तिर्यंच जो भी पशु रहते हैं उनको खिला देते हैं, बट पुजारी भी उस चीज को यूज नहीं कर सकते एक्चुअली में। तो Wow, I वो didn't भी know द्रव्य this. है। If pujari is Jain, then he cannot use. कई मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण होता है तो वो ले लेते हैं. Hmm. Because in Jainism, the concept is to give up. The concept is not to take prasad. So तो then why मैम are ये you distributing Nirvan Laddu in my temple? They are doing a wrong thing. They distribute to offer. So हमारे temple में ऐसा हुआ. First few times when we distributed, the distribution was कि आप अपने हाथ से निर्वाण लड्डू चढ़ाओ. Right? That you are just wishing that I also get nirvan. And the people who were not familiar with the tradition, वो खा गए. That's not what you're supposed to do. Ma'am, I went to Girnar, okay, and there in our Digambar Mandir, we did this. Panditji was there and he helped us do this particular Digambar puja. But at the end of the puja, he did offer us bundi ke laddu and gathia as prasad, and he was like, "You should have this." So again, I was like, वो भी "Okay." मिथ्यात्व है. No, there is no such thing as prasad. दिगंबरों में भी मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा नहीं है ना, वही तो मैं बोल रही हूँ. See, Digambar traditions also have lot of mithya manyatas. So does Shwetambar. Right. So why is it that they can't? Sorry, I have to do this. I'm sitting outside because I don't have a house at the moment. But anyway, so why is it that they cannot eat even the dravya puja that we do, Prabhaji? Those And the elements. point is कि we are giving up. We are using those dravya to only symbolize. See, जो हमारी पूजा 8 होती है, right? अक्षत चंदन जल अक्षत चंदन and फूल, then नैवेद्य, धूप दीप and फल. Okay, so उसमें हम क्या बोलते हैं? For each of this thing that I'm offering, I wish to get that attribute in me. And जैसे नैवेद्य, तो हम तो ये कह रहे हैं कि I am not the person who eats. The soul doesn't eat. So I'm giving up this to remind me that I don't need to eat. So then how can I turn around and just take it back and eat it? So that's the reason behind it. जबकि हिंदुओं में है कि you show it to भगवान, or like as if he's going to eat, which he doesn't obviously. And then now it's a blessing of the Bhagwan, so you eat it. So it's a totally different thinking, different philosophy. But you can reuse it, correct? You should, yes, you shouldn't be throwing away things. That's why I don't much care for even Dravya Puja. See, because I'm trying to do it with my grand. Helps. But otherwise, if I alone have to do puja, I wouldn't even use anything. Or if I do, I'll just use chawal and reuse it. I don't care. Reuse means what? Reuse it for the Means puja. For the puja. If the Brahman cooks the rice, it's fine with me. I mean, you don't have to throw it away. Ma'am, I have Can you use it for the puja? What's that? Can you use it for the puja again? Another puja, another time? I know they don't. I don't want to say something wrong to you guys. But logically, yes. Because the only reason you are using it is to not fall asleep. Because when you're doing something, you feel like, yes, you're paying more attention to the puja. That's the only reason to use dravya. Otherwise, you can just sit and
and get the Yeah, bhav. because when I'm doing it with my grandkid, right, then he gets really interested in it and wants to do it. Yeah, So otherwise we just read. The kid is not going to get interested. He's going to fall asleep. So now he feels like, and like, let's say if it was 5-year-old child, with him, even if you do only rice, then he gets bored. So then you give him 8 different things. Okay, if I say Jal, you do this. If I say Chandan, you do this thing, you do this. That's the purpose of it. So the kid feels he's doing something. And then slowly, he starts liking to come to the puja. As he gets older, he starts understanding the meaning of the puja. Then he may someday he doesn't need to use those dravya. So So, to ma'am, begin, it's fine. comparatively, bhav puja is a preferable option. Yes, it is a preferable option. बट जब हम लोग पूजा में स्वाहा बोलते हैं तो इट मीन्स दैट हम लोगों ने उस चीज को त्याग कर दिया, तो उसको वापस से रीयूज करना ठीक है? नहीं, actually, I need to get back to you on that one. Because in my son's wedding, we just did this thing swaha, and the swaha doesn't mean I'm giving up. I think it's something else. So I'll tell you guys later what it was. मैं भूल गई हूँ exactly क्या था meaning. I think I agree. उस particular हमारे जो पूजा में स्वाहा करते हैं, I think we are saying we agree to this. Jalam nirvapami thi swaha. What is the line of the puja? मैम जैसे अपन लोग उसको निर्माल्य द्रव्य कहते हैं, तो वो निर्माल्य हो गया, मतलब अब वो दोबारा यूज करने के लायक तो नहीं रहा, तो उसको माली को दे दिया जाता है या फिर कहीं भी, मतलब जिसके काम Again, हो। these are again social systems. They have nothing to do with religion. अब आप भूखे मर रहे हो, कहीं चावल नहीं मिल रहा है, तो you might as well eat it. Common sense would say that. But then know that But that's what you're doing and yes, accept then it. right. So what I'm saying is, lot of these things have social significances, not always, religiously. So the best thing is to understand why we don't consume it. And then, like, if there is a need, then there is no such hard and fast rule. Bottom And then line, because of that, people, to me, like, dravya is a distraction. मैं पूजा में ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ, now I'm trying to worry about, oh, ये चंदन, अच्छा ये पाउडर लेना था. I by mistake took the yellow rice. So my, my attention is going towards worrying about which one to pick. In that case, don't bother. Just sit on the side, read and follow along the puja. and Prabhaji, these Dravya pujas or any puja that we do, the goal of it is to create that bhav in us for all the 8 different things, the bhavs that we want in us. It is not So about even if what you we do give or puja for take or 10 do. minutes, yes. So even if you do every day 10-minute puja and you really got the bhav, that's worth a lot more than sitting through an hour and a half puja and half the time you were daydreaming. And I have gone through many elder people, जैसे वो पूजा इतना फास्ट बोलते हैं कि हम पास में बैठ रहे हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, बस वो बोले जा रहे Because हैं. they And do a lot now of puja. But one thing I like about in our temple, the Digambar tradition, they're very good about time. They usually finish it in an hour and a half, because उससे ज़्यादा attention span भी नहीं रहता है लोगों का. So, which is good, because, some Shwetambar pujas go 3 hours, 4 hours, then people are purposely coming in late for the last half an hour. So again, the purpose is for us to understand the meaning, what, why, so that wherever appropriate, we do accordingly. Like Rupal gave the example, if you're teaching a child, you know that their attention span won't stay by just reading the puja, then you use the dravya. If you're going alone, if you feel you can focus better without the dravya, that's fine too. अब यहाँ कोई कहे दुख देते तो दुख देखे जाते हैं, मानने से दुख देना रोक देते हैं. What is this now? What is this? I'm just trying to see, maybe I didn't read the paragraph above, sorry. So इस प्रकार कुदेव आदि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है, क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से कितने ही
तो कल्पना मात्र देव हैं, इसलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा? So those devs are not even real devs, right? Like a पत्थर को कर दिया आया, yes, what is this, शनिचर, this, that, right? Those are just made up things. So obviously it doesn't make sense कि वो कुछ कर देंगे तुम्हारा। तथा कितने ही व्यंतराधिक हैं, सो वे किसी का भला बुरा करने को समर्थ नहीं है। यदि वे ही समर्थ होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे, परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई देता नहीं। प्रसन्न होकर धनाधिक नहीं दे सकते और द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते। यहां कोई कहे दुख देते तो देखे जाते हैं। ओके, सो दिस इज इन रेफरेंस टू दैट। सो व्हाट हैपेंस इज, ये जो व्यंतर देव होते हैं ना, अब आई डोंट नो इन टुडेज टाइम, आई हैवंट काइंड ऑफ heard of it much or seen it personally myself, but you hear stories कि कोई व्यंतर ने आके कुछ ऐसा कर दिया, किसी का बुरा कर दिया, तो मानने से दुख देना रोक देते हैं। तो क्या, सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि सपोज आपने देखा कि कोई व्यंतर देव ने किसी को दुख दे दिया, कुछ पीड़ा कर दी, उनका कुछ तोड़ फोड़ दिया, वट एवर द केस में बी, सो डू यू थिंक कि उनको तुम पूजने मानने लग जाओगे तो वो नहीं दुख देंगे? ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। इसके पाप का उदय हो तब उनके ऐसी ही कुतूहल बुद्धि होती है। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि the bigger निमित्त is your own पाप का उदय, because you had पाप का उदय, that व्यंतर they felt like giving you hard time and doing something bad to you. And they are उससे nimit. They are just they are nimit. also nimit. Yes, even कर्म is निमित्त, but कर्म is a bigger first निमित्त। उससे वे चेष्टा करते हैं, चेष्टा करने से यह दुखी होता है, तथा वे कुतूहल से कुछ कहें और ये उनका कहा हुआ न करे तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं, तथा इससे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते। सो इसमें इसमें एक स्टोरी कोई सुनाता था, उसको मैं बताती हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो एक स्टोरी थी, आई मीन दिस इज प्रॉब्ली रियल। सो एक भूतनाथ था और एक काइंड ऑफ अ वियर्ड नेम मूतनाथ था। सो कोई पेड़ था, वहां पर व्यंतर रहते थे, एंड दैट इज पॉसिबल, राइट? इवन यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ these व्यंतर देव्स, दे लिव इन ओल्ड खंडर में या पेड़ में, जहाँ बहुत नहीं लोग जाते हैं, इस तरह से। ओके, so there was this two brothers, one was very mild डरपोक type and the other one was, he didn't care, happy go lucky। वो जाके उस पेड़ के नीचे हमेशा सुसु कर देता था। तो द व्यंतर वुड ट्रबल द अदर किड, जो डरपोक था, कि तू अपने भाई को बोल वहां नहीं करे, नहीं तो मैं तेरा बहुत खराब कर दूंगा। एंड दिस kid was very very scared, he would try to tell the brother and he didn't listen। वो फिर भी वो बदमाशी करता रहा, then the vyantar couldn't do anything। so those who don't get affected, don't get scared of them, then they leave them alone। so that's another something it teaches you, the more gullible you are, the more the vyantar can bother you। So the ऐसा भी Vyantardev could do nothing about it. Yes, they couldn't, they don't have the powers to do anything to you। And that is why they say even hypnotism only works on people who have very weak willpower। Like I wanted to get hypnotized and I couldn't। So then what is this the meaning of this paragraph? What is the meaning of Kutuhal Yes, that's Buddhi the meaning of it, Cheshta? that if your Shraddha is pakka, you will not get scared and the Vyantar Dev cannot bother you।
So what is Kutuhal Buddhi? Kutuhal means what do you call cherna? You know, like Tease. tease, basically. Yeah, they like to tease people. The So Vyantardev does that. the person who gets teased. So जो शिथिल, जो कमजोर कोई है, उस कमजोर जानकर उसको टीज करते हैं. So उससे वे चेष्टा करते हैं, तब उनके ऐसी ही बुद्धि होती है. Oh, so उनकी over here, इसके पाप का उदय हो तब उनके here is the person. कि अगर आपका पाप का उदय है, means something bad was going to happen to you anyway. Because anyway something was going to happen to you. It's just like they say ना, किसी से आपकी टक्कर हो गई और आप गिर गए. अब गिरे तो इसलिए कि आपका पाप का उदय था, आपकी हड्डी टूटनी थी. But that person बेचारे उसको blame और आ गया because he ran into you. तो उसको कैसे कतूहल बुद्धि होगी? जब वन हु इज हैविंग पाप उदय, नहीं, वो तो कोइंसिडेंस है. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि when आपका पाप का उदय है तो वो व्यंतर देव को टीजिंग की बुद्धि हो जाएगी. उनके over here means व्यंतर देव. यस, उनके मीन्स व्यंतर देव. तो वो चेष्टा करते हैं, और चेष्टा वो लोग बॉदर करते हैं तो ये बॉदर हो जाता है बिकॉज इसका पाप का उदय चल रहा है. So मैम इट इज ऑल निमित नैमित्तिक संबंध जैसे, जब वो उदय का कर्म आता है सब कुछ. और अगर आपका पाप का स्ट्रॉन्ग उदय नहीं है, सी वीक उदय जब होता है तो आपको वो बॉदर कर रहा है, बट यू डोंट केयर, यू डोंट लिसन टू देम. जैसे दैट भूतनाथ ने किया ना, ही डिडंट लिसन, तो वो कुछ नहीं कर सके. Okay. Oh, yeah, I think the problem is with the pronouns. It's never clear what they are referring to with those pronouns. For me, it happens the problem. Huh? Because they have been talking about Vyantar on the paragraph before. So it's a continuation. So they use the word usse, uske, like that. Right, right. Ma'am, in that sentence they have written, इसके पाप का उदय हो तब उसके उनके ऐसी. It is like इसके उनके, they saying two. Yes, the person who is suffering, उसके पाप का उदय हो तो तब उनके मीन्स व्यंतर के ऐसी कुतूहल बुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं. उससे मीन्स so the buddhi. This person A has a पाप का उदय, that this Vyantar Dev feels like teasing this person and doing that effort of teasing. Or because that कुतूहल बुद्धि वो चेष्टा कर रहे हैं, they are doing the effort, the Vyantar is doing the effort, and this guy whose पाप का उदय is coming is becoming दुखी, वो दुखी हो रहा है. Yeah. और जिसका पाप का नहीं है स्ट्रॉन्ग उदय, in that, and also that person is not a weak person, तो उसके साथ क्या होगा? अब ये व्यंतर आया टीज करने को, वो कुछ ट्राई कर रहा है आपको सताने का, बट यू डोंट बॉदर. जैसे नहीं भाई बहन में होता है, कई बार गर्ल्स तो बहुत जल्दी रो पड़ती है, देन द ब्रदर फील्स दे कीप टीजिंग देम, एंड द वंस हु डोंट इजीली गेट बॉदर्ड, उनको फिर कोई टीज भी नहीं करता. ट्रू. सो ऐसा भी देखा जाता है, कोई जीव उनको नहीं पूजते, वह उनकी निंदा करते हैं, वे भी उनसे द्वेष करते हैं, परंतु उसे दुख नहीं देते. सी देयर आर सम पीपल हु डोंट, उनको पूजते भी नहीं है और उनकी निंदा भी करते हैं, स्टिल दे डोंट डेयर बॉदर दोस पीपल. ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि अमुक हमको नहीं मानता, परंतु उस पर हमारा कोई वश नहीं चलता. इसलिए व्यंतरादिक कुछ करने में समर्थ नहीं है, इसके पुण्य पाप ही से सुख दुख होता है, उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती. So I don't know if any of you have experienced this. There are as a child I remember कि किसी को कुछ ऐसा रोग हो गया, किसी को कुछ ऐसी परेशानी. So when people feel helpless, then they want to try anything and everything.
right? So there are people, हम वो चिमटे से कुछ कर देंगे तो तुम्हारी ये ठीक हो जाएगी, कोई वो मयूर पंख लेके बैठ जाता है, ओ तुमको ये क्रेजी कोई हो गया तो उसका भूत भगाने के लिए बैठ जाते हैं. So like all those things are, and then they say कि जो उसमें बिलीव करता है उसका ही होता है अच्छा बुरा, because they're basically getting hypnotized. Part of it is just a mental belief system thing. मैम देन आई हैव अ डाउट, क्या ये किसी के शरीर के अंदर आ सकते हैं? कैन दे कम इनसाइड हाँ, वो समवन आ एंड सकते हैं. Yes, they can come. So देन they, वो जो भी एक्ट अगर करवाएंगे उससे अगर कुछ गलत कर रहे हैं देन हाउ इट? तो वो तो देखो, एक उनको एबिलिटी होती है. So that आत्मा has the ability to enter any body. अब आपकी बॉडी में आ गए, so they are driving your pudgal. So that then that person cannot help it unless they are also strong-willed. That somehow, for strong-willed people, the Vyantar doesn't have the ability to even get into their body. But yes, I used to not believe that कि वो किसी की बॉडी में आ सकते हैं, but ये आ सकते हैं. This feels like a very strange topic. The funny thing is, I've experienced it. My mother-in-law used to get my father-in-law, and I was very young, Really? saw it, and like for me, it was first time I saw something like this. I had heard my husband say that this happens, and then because उनको कुछ पता नहीं है तो दो हाथ जोड़ के वगैरह खड़े हो जाते थे. And like I'm like, I used to be very anti all this, at that time when I was so much younger. मुझे एक दिमाग में फितूर था, ये कुछ नहीं होता है, देवी देवता नहीं होता, भूत नहीं होता, this that. So I had this strong thing. But then when I witnessed it, I was like, actually this can happen. So the good thing is I didn't get arrogant about it. So it wasn't like, oh my God, ye kuch nahi hota hai. What is this? What is that? No, I basically said, look, I don't understand this. And since I don't understand, I'm not saying that you don't exist, but I'm not able to bow down to you. And I'm not disrespecting you, but I'm not going to, like worship you, haath jodo you or anything like that. The amazing thing is it stopped happening to her after that episode. I only saw it once. Which मैम was लेकिन happening. अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है मान लीजिए, तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? उसको किस तरह मतलब आप डील करोगे उस चीज के साथ? तो जितना encourage करो. See what happens. अब जैसे for example in this situation. So in the villages they are used to this कि भाई कुछ आया, especially अगर आपका कोई relative ही आ रहा है. Like like that happens, तो obviously you're not going to disrespect, right? तो आप सोचोगे कि वो कोई, चाहे वो नीची देवगति है पर कोई देवगति में गए हैं, तो ये हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि भाई whatever he is going to say, we listen to it और we question. क्योंकि देव को थोड़ा अवधि ज्ञान हो सकता है. They have their own abilities. So मैम then यहाँ पे कोई भी है मतलब इन आवर सोसाइटी एंड एवरीवन सेज कि उनके ऊपर पद्मावती माता आती है एंड बहुत टाइम ते है मतलब बहुत बार आता है एंड शी आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक एंड उनके हाथों से कुमकुम निकलता है. मतलब आई डोंट नो बट आई डोंट Yes, गो, it's आई डोंट. possible. वही मैं कह रही हूँ, पहले मैं सोचती थी it was all a नाटक और show. That is not the case. It can happen. So those types of souls have those abilities. क्योंकि उनको, जैसे आपको देव गति मिल गई, तो अब देव गति में लोएस्ट फॉर्म ऑफ देव की मिल गई आपको बर्थ. अब उस गति के अनुसार जो जो एबिलिटीज आपको मिलती है, those are just some of those abilities. और मैम मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हमारा बच्चा ही है, अगर उसको ऐसा कुछ और वो फैमिली मेंबर नहीं है, कुछ और ही है, कहीं कुछ उसने मान लीजिए टॉयलेट ऐसा किया है या कहीं कुछ इस तरह हो गया है, तो फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए मतलब उसके लिए फिर अगर कोई बताता है कि वहां चले जाओ वो दूर कर देंगे या वहां चले जाओ वो दूर कर देंगे,
तो फिर हम नहीं जाते हैं क्योंकि मिथ्यात्व मानते हैं, तो फिर उसका इलाज नहीं, कैसे किया तो जाएगा? the best इलाज is that you stop believing it कि वो आया, वो है. Okay, then you say कि no, I don't believe in you, or even if you exist, I'm not going to encourage you. So please leave. Sort of that is Even what happened with me. कि मैंने ये नहीं सोचा कि वो नहीं exist करता है. Basically, I told them कि yes, I'm not being arrogant with you, but at the same time, I am not going to worship you. So the reason now I know it is true is because I did hear him say something like, this daughter-in-law of yours is going to take care of you. So I don't need to come anymore. Something like that. So these souls, because they have the ability, so either they have unfinished work, they have some attachments left, whatever, that they come. A lot Yeah. of them are as simple as, like my mother-in-law probably was getting the husband because he's caring for the family and because he got that kind of birth. Some of them can have a dvesh buddhi towards somebody, so they could be harmful. And मैम, some of लेकिन हमारे people, सप्तामर में कोई हमें किसी के भी बॉडी में घुस गए और जस्ट कुछ कर रहे हैं. But if you don't give them bhav, if you don't give them importance, it's like if you don't welcome somebody, they won't stick around too long. They'll just leave. I actually believe that because there were souls that were coming and talking to me to pass on messages to their people, the people I knew. And then I said, I don't want to do this anymore. Like, I want to do my work, and it has stopped happening because I said, I don't want to do this. I don't Yeah, want you to just be won't a entertain it. medium. Mhm. So you can say, you can say no, it's possible and it works. They go away. They don't come to you. Mhm. So, So that is exactly what they're explaining in this paragraph. That if you are weak, you encourage, then they'll come to you. और पाप का भी आपका उदय चल रहा है. और अगर आपका पुण्य का उदय है या माइल्ड पाप भी है, and you're strong and you don't encourage, then again they will go away. तथा ऐसा जानना जो कल्पित देव है, उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंतरादिक द्वारा किया होता है. So what did they say? अब वो जैसे पद्मावती का जो बता रहे हो ना आप, that is what it is. It's not actually पद्मावती देवी कवि. दो अगर वो पद्मावती देवी अगर सम्यक दृष्टि देवी है तो शी इज नॉट गोना कम. उनके नाम से कोई व्यंतर आता है. And they are able to do all this कुमकुम निकालना और whatever. कोई पूर्व. So how in Christianity they say the saint has to perform a miracle and then they are put into the saint category, like they are given that designation. Maybe Vyantar Yes. Dev is going and doing the miracle Yes, and the Vyantar person is Devi. getting sanctified as a saint then. Yes. Prabhaji, all this has come in Jinvani, this stuff we are reading. I know, yes. So that is why so many things get cleared up in our minds. So we don't have those doubts that we would go into any wrong belief. मैम, मंदिरों में जो कुछ मंदिरों में बोलते हैं कि अभिषेक हो रहे हैं भगवान के, और ये सारा कुछ ये भी व्यंतर द्वारा होता है. सबको भी अंतर करते हैं. या आई हैव हर्ड लॉट ऑफ, अब तो कम सुन पर होता है कि कई मंदिरों में रात को अपने आप घंटियां बजती है, नाचने की आवाजें आती हैं. ऑल दोज थिंग्स आर ऑल व्यंतर. नहीं, अभिषेक जिस मंदिर में मैं पूजा करने तो जाती मैम हूँ वहां भी अभिषेक हुए थे अभी लास्ट ईयर अपने आप ही, और हमने हाँ, देखा उसे. हो सकता है. And See, but Prabhaji, the dev is not visible. तो वो ऐसा ही दिखेगा ना, अपने आप हो रहा है. but Prabhaji, when I went to the Sanghiji temple in Jaipur, the one in Sanganer, they said it is Atishay Kshetra. Atishay Kshetra because miracles have happened over there. So now are that all those miracles also Vyantar Dev? Yes. Oh my goodness. Then why are they propulgating Atishay Kshetras? It just means unusual. Something What? that normally doesn't happen. What is unusual? Atishay means extraordinary. That's all. Oh, it doesn't mean miracle.
Yeah, it doesn't mean miracle. It's just Because- something extraordinary. Okay. Kshetra, something different happened there. It's That's all. possible because the reason I said the word miracle is उनके translation में उसने miracle लिखा है उधर पर तेलुगु अतिशय में. just means extraordinary. That's all. अतिशय तो means मैम unusual. कुछ क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र कहा जाता है, कुछ को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है, क्या अंतर है इनमें? Siddha Kshetra is where people have gone to moksha from that Kshetra. Atishay Kshetra means just some unusual happening happened there. ओके. अभी जैसे कहीं जयपुर के पास में कोई बहुत फेमस जगह है, वहां पर देयर यूज्ड टू बी अ काउ दैट वुड drain its milk in a particular place every day, and then they dig up that place, and then some murti came out. महावीर जी, मैम इट्स महावीर जी. महावीर जी. महावीर जी. हाँ हाँ. So What उसको Mahavir अतिशय ji? Kshetra, because something. What is Mahavir ji? I think that's how that murti came about. Oh. Yeah, it's a प्राचीन story मूर्ति happened. that came out and मंदिर है उस चीज का बना. कहाँ पे है ये? महावीर, it's in Rajasthan only. Like I guess it's It's 1.5 near 2 Jaipur hours also. from Jaipur. Yeah, 2 hours from Jaipur. No, it's not that far from Jaipur. Yeah. But So you know, it's they a are very finding famous a place lot of. because so because of this story, a lot of people start believing कि वो क्षेत्र में जाने से कुछ अच्छा हो जाएगा, this and that. But that's not the case. So अतिशय क्षेत्र में जाने से कुछ अच्छा होगा. It's not the case, is what you're saying. How about सिद्ध क्षेत्र? Siddha Kshetra is, you should have some value to it, because that was, जैसे क्यों हमें समेत शिखर जी की importance है, because so many Tirthankars went moksha from there. Right. Okay. So it's just again वो भी काल्पनिक है. अब वो मोक्ष गए, that doesn't mean you will go moksha from just stepping on that stone. But फिर भी एक इमोशनल वो होता है कि अरे इतने सारे हमारे भगवान वहां से मोक्ष गए, तो we should go there and feel that aura, feel Oh, that the aura. Yeah. It just is like a holy kind Yes. of place, right? Yes. तो कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतराधिक हुआ, वहीं किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोक में उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है. जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है. जिस प्रकार जिन प्रतिमादिक का भी अतिशय होना सुनते व देखते हैं, सो जिनकृत नहीं है. जैसे व्यंतराधिक होते हैं, उसी प्रकार भूदेवों का कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यंतराधिक द्वारा किया होता है, ऐसा जानना. अभी ये बीच में चला था, गणेश जी इज ड्रिंकिंग और somebody is drinking milk, फिर तीर्थंकर की मूर्ति में से पसीना आ रहा है. You hear every few years something like this gets popular. That's all व्यंतर का किया हुआ. तो मैम ये मूर्तियों पे जैसे अभी रात में घंटी बजना या अभिषेक होना, इट मीन्स दैट वेंटर इज ऑल्सो डूइंग द पूजा और The Vyantar Dev is doing all that. Yeah. But is doing puja of Bhagwan. Prabhaji. They possible? think कि भगवान कर रहे हैं, तो उसकी importance लोगों को आ जाती है, but which is not the case. No. What we are saying is, वो तो समझे कि वो हो रहा है. People are thinking like this afterwards. But we are surprised that even Vyantar Dev is doing puja of Bhagwan. हाँ, they can ना, क्योंकि व्यंतर भी तो So देवगति में भी पूजा करते हैं भगवान की. But they could also just be ringing the bell, right? Just because they're ringing the bell doesn't mean they're doing puja. See, Vyantar में it can be both ways. They could genuinely be doing puja, or they could just be having fun. रात को निकले कुछ भी मस्ती कर रहे हैं. हाँ. Papaji, what does this paragraph talk about then in terms of? वो तो कोई व्यंतर को वो किसी का मतलब सेवक रहा होगा, तो when he comes back
he will show something special that लोगों को चमत्कार लगे, उससे उसको पूजें, इस तरह से. So the Vyantar is doing this to get the attention of the people. Yes, exactly. And same, then the next thing they talked about कि उसी तरह से जिन प्रतिमा का भी अतिशय means anything unusual होना is not done by jin dev, it's done by Vyantar. So people shouldn't think कि भाई हमारे, oh, I mean this actually happened. There was some jin pratima, I don't know which area, somewhere in MP, and it became very popular thing. अरे वो भगवान को पसीना आ रहा है, भगवान को पसीना आ रहा है, अरे भीड़ लगी है, like people are coming from out of town to see this unusual thing happening. And people are thinking कि ये भगवान को हो रहा है. That's why it was worth going and witnessing it. But that is not the case. तथा अन्य मत में परमेश्वर ने, Prabhaji, one second. यहाँ ना, I am again confused with the pronouns. कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था. Who is the उनका? व्यंतर का. व्यंतर का सेवक था और मरने के बाद व्यंतर हुआ. पैराग्राफ बिफोर, तथा ऐसा जानना जो कल्पित देव है उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है. कल्पित देव जैसे कि ये जो सारा है ना, so many different types of devs they just talked about. Yeah, the tree, the Tree and all cow, those the things. stone and all this. ये भी व्यंतर आके कुछ कर सकते हैं. तो जैसे वो पेड़ की पूजा कर, there was a movie in fact that had come out कि वो पेड़ पे पूजा करने जाती है and this व्यंतर always comes there and things like that. तो अब तो वो उस तरह के व्यंतर कर सकता है. फिर they are saying कोई पूर्व पर्याय में व्यंतर कभी सेवक था, बाद में मरकर व्यंतर हो गया. So see how it's telling you that it is व्यंतर. Now they're saying उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतर हुआ. समझ गए? Yeah, so he was a person who was worshipping this type of dev and then he dies and becomes Vyantar Dev and he does this thing. Right. What does this mean? वही किसी निमित्त से ऐसी तो बुद्धि हुई. कैसी इससे बुद्धि? ऐसी बुद्धि हुई कि भाई मैं ऐसे करूं कि मेरे को लोग पूजे, तो वो कोई चमत्कार दिखाता है. The Vyantar Dev wants this. Vyantar Dev को ऐसी बुद्धि होती है. राइट. या मैम मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो उनका सेवक होता है तो उसे लगता है कि सारे लोग ये चमत्कार देख के मेरे भगवान को पूजें. वो भी हो सकता है, या मुझे पूजे, दोनों हो सकता है. वो हो सकता है बिकॉज ये बताया ना कि कल्पित देव है, उनका भी अतिशय चमत्कार वो व्यंतर ही करता है. तो हो सकता है कि जैसे आज वो उस, जैसे उस वृक्ष का, उस जैसे माता काली माता का समझो कोई सेवक है आज, अब वो मर के व्यंतर हो गया, तो ही वांट्स कि उस मंदिर का और पॉपुलर हो जाए, तो ही कैन डू सम चमत्कार, so more people will come there and like that. That is also possible. Yeah, they are saying that in the next sentence. तब वह लोक में उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है. So he is doing it to get people to do the puja of that. Right. And जगत तो भोला वाला है, किंचित थोड़ा सा चमत्कार देखकर उस कार में लग जाते हैं. तथा अन्य मत में परमेश्वर ने भक्तों की सहाय की, वह प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहते हैं. We still see today also, you'll see all these some WhatsApp messages. अभी बीच में क्या आया था? There was some festival had come and there was a couple of things where that Janmashtami के time में these some people they feed 8 girls or something like that. तो उसका कहीं मैंने देखा था कि this some helpless girl has come to the door and the lady says कि नहीं ऐसी नौकरानी की बेटी को नहीं हमको खिलाना है, like that. And then the husband says नहीं उसको भी खिला देते हैं because she is a girl. तो वो ले आते हैं और जब वो उसको परोसने लगती है या जब जाने लगती है तो she shows her रूप कि she is the actual that देवी.
So those are all like no, they don't happen. So वो Ma'am, basically जो WhatsApp वाले भी जो वो कर रहे हैं, they are fooling the people. You know, ma'am, does anybody remember we used to read this comic book as kids? It was some Vikramaditya and that Bhoot used to sit on his shoulder Yeah. book. What is that Vikram name of Betal. that book? Vikram Vikram Betal. and Betal. Now I'm thinking about that because of all these things, you know. So मैम ओवरऑल द जजमेंट इज कि अगर हम उनको मान भी नहीं रहे हैं तो हमें उनका डिसरेस्पेक्ट भी नहीं करना है. इज इट लाइक दैट? though there's no need to disrespect. Now we know what it is, right? See, when you have knowledge, you become more mature. So न तो तुमको उनसे द्वेष करना है, न राग करना है, न उनकी प्रशंसा करनी है, न कुछ भी नहीं करना. Leave them alone. Because we understand उनको वैसी गति मिली है, उस गति अनुसार वो कर रहे हैं. मैम व्यंतर देव को कारमान शरीर और तेजस शरीर होता है कि वो भी नहीं है? होता है. ओके, ओनली द फिजिकल और राग बॉडी. नहीं होती. राइट. Yes. वहां कितनी तो कल्पित बातें कही जाती हैं, कितने ही उनके अनुचर व्यंतरादि द्वारा किए गए कार्यों को परमेश्वर के किए कहते हैं. यदि परमेश्वर के किए हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है, सर्व प्रकार समर्थ है, भक्त को दुखी किस लिए होने देगा. तथा आज भी देखते हैं कि म्लेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं. यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान न हो, सर्वज्ञपना नहीं रहेगा. जानने के पश्चात भी सहाय न करे तो भक्त वत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हुआ तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तों को सहाय ही कहते हैं, वह झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है. तो अभी एक मैंने मैसेज देखा था व्हाट्सएप पे. ग्वालियर में देयर इज ह्यूज माउंटेन. उसके माउंटेन के अंदर से कार्व्ड आउट ह्यूज 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 जिन प्रतिमाएं हैं, लॉट ऑफ देम. ग्वालियर. अब उसमें से सिर्फ एक ऐसी प्रथा होती है कि अगर मूर्ति खंडित हो जाए कहीं से भी तो उसको नहीं पूजा जाता है. ठीक है. सो औरंगजेब के टाइम में दे damaged most of the murtis. Now there is a story that one murti or maybe two are not damaged. So वहां पूजा होती है. And there is one story behind it कि कोई पार्श्वनाथ की मूर्ति है, जब उसको वो लोग तोड़ने गए तो वो तोड़ने वालों के कुछ हो गया. इधर दे गॉट फ्रोजन और उनके हाथ पैर कट गए, अंधे हो गए. They lost their eyesight, ma'am. They lost. Something like that. Yeah. So अब so now people को क्या लगता है, हो पार्श्वनाथ भगवान का इतना प्रताप था कि वो like वो ऐसा हो गया, अंधे हो गए. You think that makes sense? Is Parshvanath any different than Mahavir or Sumtinath or any Bhagwan? No. No, They're the they're all same. Siddha now. So why would that be the case? Obviously, some Vyantar did this. Prabhaji, then in that story of Raksha Bandhan, when they Ah. come to hurt Shrutsagar Muni, they become frozen. Maybe Vyantar Dev did that too. Yes, it says in there कि किसी देव के निमित्त से ऐसा हुआ. Yes. उसमें सिर्फ व्यंतर ही जरूरी नहीं है. It can be other devs also, higher devs also that Okay. have the ability to do those things. तो तो यदि ओके तो तथा आज भी देखते हैं कि म्लेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं. यदि परमेश्वर ऐसे कार्यों वो सब लाइक इफ बिकॉज सिद्ध भगवान कैन सी एवरीथिंग बट उनको कर्तापना नहीं है. इट्स नॉट लाइक दे गोना प्रोटेक्ट वन मूर्ति एंड नॉट द अदर. ऐसा हो नहीं सकता. फिर यदि कहोगे वैसी भक्ति नहीं है तो म्लेच्छों से तो भले हैं,
और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था ना। तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि भगवान की मूर्ति है, तो भगवान अपनी खुद की मूर्ति को तो प्रोटेक्ट कर सकते थे ना। तथा म्लेच्छ पापियों का उदय होता है, सो परमेश्वर का किया है या नहीं। यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्तों को दुखी देने वाला पैदा करता है, तथा वहां भक्त वत्सलपना कैसे रहा। और परमेश्वर का किया नहीं होता तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ, इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है, कोई अनुचर वंतरादि ही चमत्कार दिखलाता है, ऐसा ही निश्चय करना। यहाँ कोई पूछे कि कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहलाता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है, कोई कुस्थान, वेट अ मिनट, I lost where I was. और यदि परमेश्वर, where am I? Yeah. When you moved, या कोई Second कुस्थान last. निवासादिक बतलाकर अपनी हीनता कहता है, पूछते हैं सो नहीं बतलाता, ब्रह्म रूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है। कि So वो what they're Prabhaji, saying कि why do व्यंतर do all these things, all so many different things। तो व्यंतरों में प्रभुत्व की अधिकता हीनता तो है, परंतु जो कुस्थान में निवासादिक बतलाकर हीनता दिखलाते हैं वह तो कुतूहल से वचन कहते हैं। They are explaining why these things happen. So number one, the abilities can be less or more in even within Vyantardev. And then also some who show that they are in a bad spot and they show that low type of acts, तो वो again same thing teasing में बोलते हैं। कौन What बोल are रहा है? वह means who? देव, व्यंतर देव। So let's move to the next page. What are we doing with the time today? I'm kind of, we are past 1 hour at least. We have done 1 hour 20 minutes. We can finish at 9:30. Do one and a Okay. half hour. But That's fine. Prabhaji, before you proceed, in this फिर यदि कहोगे वैसी भक्ति नहीं है तो म्लेच्छ तो भले हैं. What is all this? I don't understand What that. they're saying is a lot of times what happens is कि they will say अच्छा यहाँ ऐसे खराब क्यों हो गया, तो they will हाँ. give the reason ने अच्छे से भक्ति नहीं की इसलिए ऐसा हो गया। हाँ. तो वो बोलते हैं कि भाई म्लेच्छ मीन्स दोज लाइक नॉट गुड पीपल व्हाटएवर, तो वो म्लेच्छ से तो भले हैं, और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना चाहिए था ना। हाँ. तो वो बोलते हैं कि देखो कि व्हाट दे आर सेइंग इज कि कोई समझो कहीं भक्ति चल रही है और कुछ अनहोनी हो गई, तो क्या बोल देते हैं कि भक्त लोगों की भक्ति सच्ची नहीं थी। ऐसे नहीं बोलते कई बार, ओ सच्चे मन से भक्ति करो तो हाँ. हाँ. इच्छा हाँ. पूरी हो जाती है, एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि भाई समझ लो कि सच्चे मन से भक्तों ने नहीं किया, पर भगवान की मूर्ति कुछ हो रही है तो भगवान खुद की तो प्रोटेक्ट कर लेते ना। हाँ. 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 दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। So they are So saying that all these things are done by Vyantar. It is not Bhagwan who's doing or not right, doing. or sometimes they will give those to somebody is papi in their group, so this happened. So they're saying ऐसा भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि पापी का उदय हो रहा है इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है। And because sometimes good भक्त वालों को भी कभी बुरा हो जाता है, तो if भगवान would have done it, then why would he differentiate? And what is So Bhakta they're giving all Vatsalya? basically Bhakta they're giving all Vatsalya. see, हमने पढ़ा था prove yourself it with युक्ति न्याय, so they are giving all these different युक्तिस कि अगर भगवान ने किया होता तो भक्तों को क्यों करता,
फिर अगर वो भक्तों को नहीं करता है तो परमेश्वर का किया नहीं होता, तो परमेश्वर की एबिलिटी नहीं है, ऐसा प्रूव हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है। बेसिकली दे आर एक्सप्लेनिंग कि ये जो भी कुछ होता है ऑब्वियसली भगवान कैन नॉट डू, एंड वी नो Where is the भगवान इज नॉट sentence? Where is the sentence परमेश्वर कृत right नहीं there. I है? don't know if you're able to see my cursor. So they are talking about कि वो जो बताया ना कुछ विघ्न आ गया, तो who do they blame? So Hemal, फिर यदि the that statement paragraph. is, yeah, it's the after that uttar at the bottom page, then there's that one paragraph, go above that, and then the second last line of that paragraph before. हाँ, परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है. Got it. So Very they're good. proving that why even though people talk about कि ये भगवान ने कर दिया, that is not possible. हाँ, so in these two paragraphs, तथा अन्य मत में and this फिर यदि कहोगे, in those two paragraphs it explains why it is not परमेश्वर कृत. Yes. Correct. तो या कोई पूछे, कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है, कोई कुस्थान निवासादिक बतलाकर अपनी हीनता। सो अप्रत्यक्ष मीन समथिंग दैट इज नॉट विजिबल. द व्यंतर मे बी एबल टू से समथिंग अबाउट इट एंड दे हैव दैट एबिलिटी. या फिर कुछ पूछते हैं तो नहीं बतलाता, दे डू वट एवर, उनकी मर्जी है, बता दिया, नहीं मर्जी है नहीं बताया, तो ब्रह्म रूप वचन कहता है, दे विल पुट दिस फियर इन पीपल कि ओ ऐसा हो सकता है, और गिव यू हाफ इंफॉर्मेशन, देन पीपल आर बॉदर्ड. You know, Prabhaji, all this used to happen to me when I didn't have the clarity I have right now. Now I don't get into this at all because of. And then you get all superstitious. I mean, every little thing, think about it. Yeah. किसी का 3 बार 13 डेट को कुछ गलत हो गया, they are done for life. Anything happens wrong on the 13th, they are now पक्का, अरे 13th को कुछ काम नहीं करना चाहिए. So this is how these things happen. And lot of us have that. Some stupid reason. I mean, I remember I used to even have clothes that I would think कि ये कपड़ा पहनने से तो अच्छा होता है. Oh yeah. I used to think if I have my troll pencil, I'll do well in my test. So. बालक की भांति कुतूहल करते रहते हैं. So that's what they're saying कि व्यंतर देव में ये टीजिंग प्रवृत्ति बहुत होती है. So they randomly can do something nice to someone, something wrong to someone, because they're just playing around. So जिस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपने को हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऊंचे स्वर से रोता है, बाद में हंसने लग जाता है, उसी प्रकार व्यंतर चेष्टा करते हैं. यदि कुस्थान ही के निवासी हो तो उत्तम स्थान में आते हैं. वहां किसके लाने से आते हैं? अपने आप आते हैं, तो अपनी शक्ति होने पर कुस्थान में किस लिए रहते हैं? इसलिए इनका ठिकाना तो जहां उत्पन्न होते हैं वहां इस पृथ्वी के नीचे व ऊपर है, सो मनोज्ञ है. कुतूहल के लिए जो चाहे सो कहते हैं. यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते रोते हंसने कैसे लग जाते हैं? So basically what they're saying is, this is the nature of Yantardev, that they just do random acts. So you shouldn't trust. इतना है कि मंत्रादिक की अचिंत्य शक्ति है, सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादिक नहीं हो सकते. वह किंचित दुख उत्पन्न होता है, वह कोई प्रबल उससे मना करे तब रह जाता है, वह आप ही रह जाता है, इत्यादि मंत्र की शक्ति है, परंतु जलाना आदि नहीं होता. मंत्र वाले जलाया कहते हैं, वह फिर प्रकट हो जाता है, क्योंकि वैक्रिय शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है. सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि इट्स पॉसिबल, जैसे किसी का क्वेश्चन होता है ना, बट अगेन उसमें भी बहुत मिथ्या मान्यता. देयर आर
देयर इज पॉसिबल कि कोई कोई मंत्र के इफेक्ट से उनका आना बंद हो जाए या कुछ, तो दोज आर पॉसिबिलिटीज, बट अगेन नॉट ऑल मंत्र में वर्क, नॉट ऑल, अगेन कहीं कहीं बोलते हैं ना आग से उसको जला दिया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, कि वो उनके शरीर ही नहीं होता तो क्या जला दोगे। एंड आई हैव सीन इट इन मूवीज कि वो आता है, वो बहुत परेशान कर रहा है, ओ लो इतनी बड़ी फायर कर दी, मैंने उसको भस्म कर दिया। So then मैम Prabhaji, बट इन भक्तमर वी हैव दिस मैम कि हम भूत प्रेत वगैरह से भी हम रक्षा अपने आप को करने के लिए वी हैव दोस मंत्र, या भक्तमर से इतना प्रभाव है, मतलब बट वी उसका कैन डू। नॉलेज होना चाहिए। ये तो जनरल बात हो गई कि यस इट्स पॉसिबल कि भक्तांबर के जो syllables हैं, the way they are put together, those sounds, they may have an effect, but we don't know the details. आप जनरल बोल दो भक्तांबर से हो जाएगा, that may not always happen. but Prabhaji, for the Acharya, wasn't his name Mangitungi, or what was his name? आचार्य मानतुंग, Mangtung, sorry. right. Acharya Mangtung, when he wrote रचना की इन्होंने भक्तांबर स्तोत्र की, तो वो दरवाजे सब खुल गए ना, वो ताला निकल गया, वो व्यंतर देव से हुआ। राइट, हालांकि भक्तांबर तो उन्होंने लिखा आदिनाथ के प्रेज में, हाँ, बट जो उन्होंने वर्ड्स कॉम्बिनेशंस चूज किए वो मंत्र रूप होके उसका इफेक्ट हुआ कि वो बेड़ियां टूट गई। तो So, इट इज ऐसा नॉट व्यंतर देव। संबंध इज पॉसिबल। तो मैम वन क्वेश्चन मोर कि जैसे अपन लोग जिनवाणी को तो मानते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि जिनवाणी में जो लिखा है मतलब करेक्ट। तो जिनवाणी में एक पेज पर ये लिखा हुआ है कि राहु ग्रह की शांति के लिए नमो अरिहंताणम 10,000 बार, और इस ग्रह की शांति के लिए मतलब जो भी समथिंग इस तरह कर का लिखा हुआ है, तो उस चीज का क्या मतलब है? अगेन आई वुड टेक दैट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि किसने लिखा है उस पर डिपेंड करता है। देखो, ये मंत्र हो गया, पामिस्ट हो गया, स्टार्स हो गए, दीज थिंग्स आर रियल, दे कैन बी निमित्त, पर उसका सही जानकार होना चाहिए। और क्या होता है इन टूडेज एज, बहुत परफेक्ट जानने वाले तो होते नहीं है या बहुत कम होते हैं, तो वो सुनी सुनाई बात या रैंडम, इफ somebody is experimenting on you, then भला होने की जगह बुरा हो सकता है। एंड अगेन उससे बलवान है आपका पुण्य पाप का उदय। तो ये सब में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही, पर उससे भी बलवान अगर आपके कर्म है, आपके पाप का उदय है, तो वो मंत्र भी कुछ नहीं कर सकेगा। सी इवन कर्मों का भी, रिमेंबर वी टॉक्ट अबाउट इंटेंसिटी, तो अगर बहुत इंटेंस कर्म का उदय इंटेंस है तो लॉट ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो वोंट वर्क। पर अगर माइल्ड उदय, इंटेंसिटी कम है, तो सम ऑफ दीज थिंग्स कैन वर्क। तो वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है। So there's lot of ifs and buts and conditions, and we don't know the details of them. You know, my bhabhi tells me this, that she does ambil oli, and then you have to do this much, this much, this much of all these different things, and then this will get better and that will get better. She does it, she believes it, and she does it. And she tells Right. us to do it, but I am not sure, so I have never done it, but I'm not sure what all that is then. Is that real or not? Again, same thing. Like, for example, a friend of mine, I mean, even in our temple, they do twice a year Ambil ka thing, and they do this Siddha Chakra Pujan. Okay. Siddha Chakra Pujan, nothing wrong with it. It's basically Panch Namokar Mantra ke pad and some 4 other things, right? That's fine. But they believe that something nice can happen to you. So now one of the family, her husband was on dialysis, and he got a kidney after doing couple of Siddha Chakra Pujans or whatever. So now they will announce कि भाई उनका उस सिद्ध चक्र के पूजन के कारण वो मिल गया।
Now there are so many other sick people who are doing this, and obviously not everybody is getting help. So the key here is that if the truth is कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है, if that is the truth, then all Yes. this is mithya. This is all मिथ्यात्व, इसीलिए ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. So if So- you're doing Ambil Oli and you do it for the sake of getting Swasanmukh, that's a different thing. But if you're That's doing a it with purpose of A, B, C, I should get out of it, that is wrong. That is definitely wrong. Okay. Number one, it won't happen. Number two, आप मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो. Prabhaji, it's 9:30. I was just doing a Yeah, quick so time let's check. close here. And so tomorrow, क्या करना है? Should we do again 1 hour? What do you guys want to do? Yeah, 1 hour is good for tomorrow. Okay. Yeah, I'm ready, If ma'am. everybody agrees. Yes, Okay. I'm ready. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है. इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है. वंदना शत बार. See, this that we say at the end of it, what is it saying? I am complete within myself, and Jinvani has shown me that. तो फिर बाकी सब ये मिथ्या मान्यताओं की जरूरत ही नहीं है.